Hello, dear learner students. In today's video, we are going to discuss about whiskey. Whiskey एक lengthy topic है and this is going to be a comprehensive video. First, we will discuss about what is whiskey basically. किस alcoholic beverage को हम whiskey बोल सकते हैं, क्या उसके अंदर requirement है minimum to be called whiskey. And then we will discuss about different categories of whiskey. What are the major whiskeys in the world? Okay, so first of all, we start with the definition. What is whiskey? It is an distilled alcoholic beverage. It is distilled, of course, it is made after the distillation. So in a beverage must be distilled, made from fermented mash, majorly barley. ज़्यादातर जो whiskies हैं वो आपकी barley से बनी है, aged in wooden cask. Wooden cask को बोलना ज़रूरी है because without being aged it will not be called a whiskey. Okay, it will not get color. You see, every spirit before aging is colorless, whether it is whiskey, vodka, gin, tequila, rum. So all these spirits get color only by aging in the wooden cask. That you have to understand. And in order to define whiskey, we need to see that it must be a grain alcohol. The alcohol which we are using, that should be obtained from grains, whether it is barley, wheat, corn, rye, or any other grain which is used in different type of whiskey. Okay, because in India there are some whiskey which are not basically whiskey, they are rum. They are made from the molasses, from the sugar cane industry से बचे हुए मोलासिस से जो अल्कोहल बनाया जाता है उसके अंदर कलर और फ्लेवरिंग एसेंस मिला के वो विस्की बना रहे हैं. दैट इज नॉट विस्की. सो ओरिजिनल ट्रू विस्की must be made from grain alcohol and then it must be aged in wooden barrel. So in scotch, like, there is a requirement of minimum 3 years of aging. अगर आप उसको 3 साल aging नहीं करेंगे, you cannot call it a scotch. Then you get a whiskey. So this is the broad uh, terminology for the whiskey. Now we see what are the different types of whiskey. So whiskey can be classified in five different categories. First is Scotch. Scotch is the most famous and the leading whiskey. And then we have the bourbon, Irish, Canadian, and Japanese. So Scotch is from Scotland, of course. Bourbon whiskey is from USA. Then Irish whiskey is from Ireland. Then we have Canadian whiskey, of course, from Canada, and Japanese whiskey, which is from Japan, which is getting famous recently from 2001. Now there are two spellings of whiskey. One is with KEY and one is with KY. So the KEY terminology is used in USA and Ireland. So for bourbon whiskey and Irish whiskey, the terminology is KEY. And for other famous whiskies, that is Scotland, Canada, Japan, and rest of the world, they follow the terminology that is KY. Now, first of all, we understand Scotch whiskey because Scotch whiskey is world famous, and so there are different types of Scotch also. First of all, Scotch whiskey को Scotch का लेबल टर्म लगाने के लिए what are the requirement, minimum requirement? First requirement is must be made in Scotland. So any whiskey, if you are making outside Scotland, if we are I'm making a Scotch, if I'm making a whiskey in India, I cannot label it as Scotch. ठीक है, तो स्कॉटलैंड में बनी होनी चाहिए. दूसरी रिक्वायरमेंट है 40% मिनिमम अल्कोहल बाय वॉल्यूम उसके अंदर होना चाहिए. थर्ड रिक्वायरमेंट, इट मस्ट बी एज मिनिमम 3 years इन ओक बैरल्स बाय लॉ. दिस इज बाय लॉ. ओके, इफ यू डोंट फॉलो इट देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ स्कॉच. अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बिकॉज स्कॉच में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कॉच विस्कीज हैं जिनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं थ्री बेसिक कैटेगरीज में. वन इज सिंगल मॉल्ट and the other is single grain and third is blended whiskey. Okay, then blended also can be categorized in two different category, blended malt and blended grain. अब हम एक एक कैटेगरी को we will see what are the requirement for single malt, what is single grain and what is blended. So single malt whiskey refers to whiskey which is produced in single distillery. तो जहाँ पे भी आप ये single नाम देखेंगे, don't be confused with this because some people say this is from single batch or it is from single grain. No, this single is
refers to distillery. Distillery is a place where whiskey is made. So that place, if you are making a whiskey in one particular distillery, that will be called a single malt scotch. And malt also, malt means barley. दिस इज बार्ले, ये जहाँ पे भी आपको मिलेगा दैट मीन्स बार्ले, वी आर टॉकिंग अबाउट बार्ले. सो सिंगल विच इज फ्रॉम वन डिस्लरी, सिंगल डिस्लरी, एंड मॉल्ट विच इज बार्ले, मेड बाय बार्ले. ओके, दैट इज कॉल्ड सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की. सिंगल मॉल्ट कैन कंटेन विस्की फ्रॉम मैनी डिफरेंट कास्क. तो एक ही डिस्लरी के अंदर वो अलग अलग बैचेस को रखे हुए अपने ब्लेंड कर सकते हैं, उसके टेस्ट को कंसिस्टेंट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए. दे कैन हैव डिफरेंट बैचेस मिक्स, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड अ सिंगल मॉल्ट as long as it is made in one single distillery. सिंगल मॉल्ट रेफर्स टू बार्ले एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉट स्टिल मेथड. तो दो डिस्टिलेशन के मेथड है, पॉट स्टिल एंड पेटेंट स्टिल. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, देन आई हैव मेड द particular videos for pot still distillation and patent still distillation. Basically pot still method से जो spirits बनती हैं, they are more full bodied and they have more aroma of the raw material. So raw grain जो भी इन्होंने barley use किया है, it will have more flavor of that, and it will mature slowly. Okay, it will take some time to mature. Now single grain whiskey, single malt is done, now single grain. Here also we see single, and it looks very confusing. Okay, single is grain, we are not talking about grain, it doesn't have anything to do with this. Okay, grain. Single is again distillery, and grain is any grain other than barley. So any grain which is used other than barley, other grains are like corn, wheat, rye, all these grains. एंड इट मे बी मोर देन वन ग्रेन. ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रेन से बनी है, वो सिर्फ बार्ले से बनी है, वो सिर्फ राई से बनी है, या फिर वो कॉर्न से बनी है. ऐसा नहीं है, मिक्स ऑफ ग्रेन भी हो सकता है, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड सिंगल ग्रेन स्कॉच विस्की. बट रिक्वायरमेंट इज दैट कि वो एक ही डिस्लरी से बनी है. सिंगल ग्रेन स्कॉच विस्की इज मेड बाय ग्रेन अदर देन बार्ले सच एज कॉर्न, व्हीट, राई. सिंगल ग्रेन रिगार्डलेस ऑफ द नेम कैन बी मेड बाय वन और मोर ग्रेन. तो ग्रेन ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मिक्स ऑफ ग्रेन हो सकता है, बट स्टिल इट विल बी कॉल्ड सिंगल ग्रेन. सिंगल इज फॉर डिस्लरी, but it is made by continuous method, continuous still. It is made by patent still. So patent still से बनी हुई spirits are light and low in flavor. पॉट स्टिल से बनी हुई जो स्पिरिट्स हैं, विस्कीज हैं, दे आर हैवी एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स. नाउ वी कम टू द ब्लेंडेड स्कॉच, थर्ड कैटेगरी. सो blend of different whiskies, blend of one or more single malt with one or more single grain. They have, they can blend different whiskies, they can blend malt with grain, they can mix two malt with grain. So they have to make a unique product. Okay, this unique product has a balance. तो ऐसा नहीं है कि blended whiskies are always cheaper. Okay, there might be premium blended whiskies also, which has the qualities of different whiskies mixed together, and they have made a particular product which is very impressive. Okay, so that is the reason of blending, to make a consistent product. If more grain whiskey is used in the blend, it provide full body to the blend. जैसा कि मैंने बताया था, that grain also provides some body, and if malt whiskey is used in the blend, it provides more flavor to the blend. Therefore expensive blended whiskey will have higher percentage of malt. सो अगर हम मॉल्ट और ग्रेन विस्कीज को मिक्स करके बना रहे हैं, तो ये याद रखना है कि अगर उसके अंदर मॉल्ट विस्की ज़्यादा है, सो दैट विल बी अ एक्सपेंसिव ब्लेंड, एंड इफ इट हैज़ ग्रेन मोर देन इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव ब्लेंड. Blended malt scotch whiskey example, Johnny Walker. They make a lot of different blend of whiskey. This blended whiskey also called wetted malt or pure malt, combination of two or more single malt scotch whiskey from different distilleries. There is no grain whiskey allowed here. Okay,
तो सिंगल मॉल्ट ब्लेंडेड की कैटेगरी के अंदर ब्लेंडेड मॉल्ट है और ब्लेंडेड ग्रेन है, ये हमने पहले देखा था क्लासिफिकेशन में। तो उसके अंदर अगर मॉल्ट है तो इसके अंदर ग्रेन अलाउड नहीं है। और अगर ब्लेंडेड ग्रेन स्कॉच विस्की है, अ ब्लेंड ऑफ टू और मोर सिंगल ग्रेन, तो सिंपल है। अगर ब्लेंडेड मॉल्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा मॉल्ट विस्कीज़ हैं फ्रॉम डिफरेंट डिस्लरीज। अगर हम ब्लेंडेड ग्रेन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सिंगल ग्रेन विस्की हैं, मोर देन टू डिस्लरी, मोर देन वन डिस्लरी, ठीक है, अलग अलग डिस्लरी से। अब व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई we use whiskey from different distilleries? Because different distillery has different flavor and aroma, they make method of making is different, so the resulting spirit will give altogether different flavor. Okay, because they are using different type of still, not everybody is using bada chota, different type of still they are using, pot still or patent still method. Their equipments are different, their terroir, the climate, microclimate and area, soil, everything is different, so it gives altogether different flavor. To mix that in a blended whiskey and make a unique product is all about blended whiskey. तो blended whiskey हमारा हो गया है। Now next is bourbon whiskey. बर्बन विस्की इज फ्रॉम यूएसए एंड डेफिनेशन में अगर हम जाएंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, दैट इट इज़ फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका में आप कहीं भी बना सकते हैं बर्बन, फ्रॉम एनी स्टेट, देर आर 50 स्टेट, 50 स्टेट में कहीं भी बन सकती है। मेड विद 51% ऑफ कॉर्न एटलीस्ट। ओके, ये रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर मिनिमम 51% कॉर्न होना चाहिए और वो एज होनी चाहिए न्यू चार्ड ओक, न्यू चार्ड बैरल में। ठीक है, न्यू चार्ड बैरल, चार्ड क्या है, बर्न्ट, अंदर से जला हुआ बैरल जिसको यूज करते हैं स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, वो इसमें यूज होना चाहिए। तो दो रिक्वायरमेंट है, नंबर वन इज 51% कॉर्न, सेकेंड इज न्यू चार्ड ओक बैरल। ओके, न्यू, नॉट यूज्ड, बिकॉज इन अदर विस्की दे कैन यूज पहले से यूज हुआ, बर्बन का यूज हुआ हुआ बैरल दे यूज, एंड दे कैन यूज शेरी बैरल, दे कैन यूज एनी अदर पोर्ट बैरल टू गिव डिफरेंट फ्लेवर्स। और पुराना बैरल यूज़ करना सस्ता पड़ता है, बट न्यू बैरल अगर आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ मच एक्सपेंसिव। तो बर्बन के केस में ये एक्सपेंसिव है। बर्बन विस्की मोस्टली अबाउट 90% कमिंग फ्रॉम केंटुकी स्टेट। केंटुकी स्टेट को याद रखना है अगर हम बर्बन की बात कर रहे हैं, बिकॉज केंटुकी से 90% आपकी बर्बन विस्की आ रही हैं, बाकी 10% ही इधर उधर से आ रही हैं। हाउएवर इट कैन बी मेड एनीवेयर, तो रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, आ सकती है कहीं से भी, बट 90% केंटुकी से आ रही हैं। बर्बन नेम इज derived from Bourbon Destiny dynasty of France. There is no minimum age requirement in bourbon whiskey. However, it is aged between 2 to 4 years in new charred oak barrel. ऐसा बाय लॉ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 2 से 4 साल ये एज करते ही हैं न्यू चार्ड ओक बैरल में। ठीक है, फॉर स्ट्रेट बर्बन इट मस्ट बी एज। तो अगर आपको बर्बन विस्की के ऊपर स्टेट बर्बन मेंशन करना है, ठीक है, बिकॉज द पर्सन कंज्यूमर विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑफ हायर क्वालिटी, तो इट मस्ट बी 2 ईयर एज, 2 साल एज होनी चाहिए। तो आप उसके ऊपर लिख सकते हैं स्ट्रेट बर्बन, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इस केस में केंटुकी स्ट्रेट बर्बन। केंटुकी में बनी हुई स्ट्रेट बर्बन मीन्स 2 साल एज की हुई न्यू चार्ड ओक बैरल के अंदर, दैट इज अ बर्बन विस्की। नेक्स्ट इज बॉटल इन बॉन्ड BIB सर्टिफाइड बर्बन। ये 4 ईयर मिनिमम एजिंग। तो यू कैन सी दिस लेबल बॉटल इन बॉन्ड और BIB ऑन द बॉटल। So this type of bourbon will be minimum 4 year of aging in new charred oak barrel. नेक्स्ट इज बर्बन लेबल्ड एज ब्लेंड। सो ब्लेंडेड बर्बन में आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लेंडेड में हैव, इसके अंदर एडिड कलर फ्लेवर आप ऐड कर सकते हैं, अदर स्पिरिट ऐड कर सकते हैं, न्यूट्रल स्पिरिट भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 51% मस्ट बी बर्बन, 51% मस्ट बी बर्बन, 51% इसके अंदर बर्बन होनी चाहिए, रेस्ट आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और 51% बर्बन के अंदर आपको पता है 51 बर्बन के अंदर 51% कॉर्न होता ही है। ओके, सो दीज आर दी बर्बन। टेनेसी विस्की,
नाउ व्हाट इज टेनेसी? जैक डैनियल आप देखते हैं, जैक डैनियल इज अ टेनेसी विस्की एंड इट कम्स फ्रॉम अमेरिका। तो बर्बन का ही एक सॉर्ट ऑफ वेरिएशन है टेनेसी। टेनेसी इज ए स्टेट इन यूएस, ये एक स्टेट है यूएस के अंदर। and Tennessee is a straight whiskey, but since it is produced in Tennessee it is labeled as Tennessee. So Tennessee स्ट्रेट बर्बन की हमने बात करी थी। स्ट्रेट बर्बन मतलब 2 साल एज, मिनिमम 2 साल एज है ये। बट लेकिन क्योंकि ये टेनेसी रीजन से आती है तो ये लोग अपनी विस्की को बर्बन नहीं लिखते, ये लोग लेवल के ऊपर लिखते हैं टेनेसी, एंड दे कंसिडर इट टू बी प्रीमियम। ओके, it is premium actually. And they also have another step in this. After making bourbon they do charcoal filtration. Charcoal filtration से क्या होता है? This whiskey becomes light. Okay, charcoal filtration which is called Lincoln County process. तो ये लोग बड़े बड़े प्योर वुड लेके और उसको जला के और उसके बाद में उसका जो है वो कोल बना के और उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप थ्रू द बेड ऑफ चारकोल दे डू चारकोल फिल्ट्रेशन, सो विच रिमूव्स द एनी कंजीनर्स, इम्प्योरिटीज विस्की के अंदर जो भी है, एंड मेक्स इट वेरी लाइट एज कंपेयर टू बर्बन. So these are the two famous brand of bourbon whiskey. Jack Daniel is world famous. Everybody knows Jack Daniel Tennessee whiskey and George Dickel Tennessee whiskey. So that was the bourbon whiskey. Now we come to the Irish whiskey. Next category, Irish whiskey. The name whiskey comes from Irish term Ishkbaha. Okay, डोंट लुक एट द स्पेलिंग बट द प्रोनाउंसिएशन इज इश्क बहा, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में लिखा है, विच मीन्स वाटर ऑफ लाइफ. इट इज़ मेड इन आयरलैंड, मेड विद अनमॉल्टेड बार्ले. इसके अंदर यही एक क्वालिटी है दैट इट इज़ मेड फ्रॉम अनमॉल्टेड बार्ले. दूसरी विस्कीज़ के अंदर जो हम बार्ले यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ माल्टेड बार्ले. तो माल्टेड और अनमाल्टेड में क्या डिफरेंस है? वो हाफ जर्मिनेट करके उसको हम स्टॉप करते हैं जर्मिनेशन को और फिर उससे जो बनाते हैं हम, दैट प्रोसेस एक्चुअली creates the enzyme which converts the starch into maltose, so that is a process. उसके लिए हम उसको malt करते हैं और malted barley यूज करते हैं, but they use unmalted and malted barley together. Okay, so that is one of the quality of Irish whiskey, आपको याद रखनी चाहिए. ट्रिपल डिस्टिल्ड, ये ट्रिपल डिस्टिल्ड होती है तो काफ़ी लाइट और स्मूथ होती है एज कम्पेयर टू अदर विस्कीज़. 3 साल मिनिमम एजिंग रिक्वायरमेंट है इसकी वुडन बैरल में, और बैरल का साइज भी डिफाइन किया गया है बाय लॉ दैट इट मस्ट बी नॉट मोर देन 700 लीटर्स. तो ज़्यादा बड़े बैरल्स नहीं होने चाहिए, छोटे बैरल्स होने चाहिए. छोटे बैरल्स में फ्लेवर और अरोमा ज़्यादा आता है विस्की के अंदर एज कम्पेयर टू बिगर. इसके अंदर भी सिंगल मॉल्ट है और सिंगल ग्रेन है, तो सेम रिक्वायरमेंट है इसके अंदर भी. इट मस्ट बी मेड ओनली बाय माल्टेड बारले. तो बारले इसके अंदर भी आ गया था, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था. मॉल्ट जहाँ पे भी आ गया, मॉल्ट का मतलब है आपका बारले. मस्ट बी एज इन ओक बैरल फॉर मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी 700 लीटर से ज़्यादा ना हो, और 3 ईयर मिनिमम एजिंग रिक्वायरमेंट है. मस्ट कम फ्रॉम सिंगल डिस्लरी. तो सिंगल का मतलब ही यहाँ पे डिस्लरी है. ठीक है. And famous brands are Sexton, Bushmill, and Teeling. These are some of the famous brand of single malt Irish whiskey. Next is single grain Irish whiskey. It must be distilled from grain or mixture of grains such as wheat, rye, corn, etc. Made by patent still. All the requirements are same like Scotch. तो अगर आपने स्कॉच की रिक्वायरमेंट पढ़ ली, सेम सिंगल मॉल्ट एंड सिंगल ग्रेन में आप आयरिश में भी वही रिक्वायरमेंट्स हैं. मस्ट बी एज मिनिमम 3 years in barrel. And the famous brands of single grain Irish whiskey is Hyde and Egan's. Next is blended Irish whiskey. It is a brand of single malt and single grain whiskey, and the famous brands are Tullamore Dew and Jameson. So Jameson is, I guess, the most famous Irish whiskey which is used and which is found in all the bars.
Next category is Canadian whiskey. Of course, comes from Canada. Canadian whiskey, also known as Canadian rye whiskey or rye whiskey. इसके दूसरे नाम हैं, राई विस्की भी हम इसको बोल सकते हैं, एंड कैनेडियन राई विस्की भी बोल सकते हैं, एंड राई विस्की भी बोल सकते हैं. कैनेडियन विस्की आर मोस्टली ब्लेंडेड, मेड बाय मल्टीपल ग्रेन्स. मोस्टली ब्लेंडेड हैं, तो इसके अंदर आपको सिंगल मॉल्ट और सिंगल ग्रेन ये सब नहीं मिलेगा. मोस्टली ब्लेंडेड ही आपको मिलती हैं. कैनेडियन विस्की हैज़ मोर परसेंटेज ऑफ कॉर्न इन द मैश. मैश इज अ मिक्सचर ऑफ grains which we are using for distillation. Canadian distillers added a small amount of rye, which made whiskey unique flavor, and people demanded this type of whiskey. So what they did initially, they added some rye in the mash, in the grains, so that made a unique style of whiskey. And later on, people start drinking that, and they demanded this particular style. By law, minimum 3 year matured in small cask barrels, not exceeding 200 liters. So they also have requirement of the capacity of the barrel in the Canada, that it must be aged minimum 3 years, and that too in a smaller barrel size. By law, minimum alcohol 40% alcohol by volume, same like Scotch, and it is lighter than American bourbon and use different type of barrels. कैनेडियन विस्की ब्रांड्स हम देख लेते हैं. कैनेडियन क्लब इज द मोस्ट फेमस वन, एंड जेपी वाइजर्स एंड 40 क्रीक. These are the some famous brands of Canadian whiskey. Next is Japanese whiskey, and Japanese whiskey, the production has started just about 100 years ago, and this person named Masatake Takesuru, he went to Scotland and learned the art of distillation. He worked in several distilleries over there, and after learning all these techniques, he came back to Japan and he worked in Centauri distillery, and he worked several years there, and then he started his own distillery named Nikka. And today, Nikka and Centauri are the most famous two distillery which are located in Japan. Japanese whiskey got very popular recently after 2001, when they won several awards and leaving behind the Scotch. So there was some, in these competition they do blind testing, so they don't know whether it is Scotch or whether it is this whiskey is from Japan. And after that, later on, they open the labels and see with that which whiskey was that. So the whiskey critics, those who regularly taste these whiskey, they claim that this whiskey was even better than the Scotches. And this whiskey, Japanese whiskey, won many awards. In Japan, distillery also use Japanese oak. Another specialty of Japanese whiskey is that they use Mizunara oak, which is 200 years mature. It takes time of 200 years to mature, and it gives totally unique flavors to the Japanese whiskey. And they use this kind of oak in maturing their whiskey. Sometimes their blended whiskey is also made in one distillery that is still called blended. So they have different style of stills, different distillation units which they blend together and make a blended whiskey, because there are few distillery only. So that was all. Now summary, we can see what we have discussed. We have discussed about the whiskey. What is whiskey basically? So it is a spirit which has been aged, and spirit is grain spirit. So grain spirit which is aged is can be called whiskey. Now different varieties of whiskey, that is Scotch from Scotland, bourbon from USA, Ireland, Irish whiskey from Ireland, Canadian from Canada, Japanese is from Japan. And we have seen further classification of Scotch whiskey. Scotch whiskey may we have single malt, which is made from single distillery and from barley, single grain, which is from single distillery and made from other grape than barley, and then blended Scotch, which is the blend of single malt and single grain. And there are two varieties which are blended malt, which has two or more blended whiskey, and blended grain, which has two or more grain whiskies, single grain whiskies.
In bourbon, we had seen that in America, all the states can make bourbon whiskey, and Kentucky is the state which makes maximum of the bourbon whiskey. And there was another state which is Tennessee, which makes a lighter version of bourbon that is called Tennessee whiskey. They use charcoal filtration. Then we had seen Irish whiskey, which is triple distill, very light. And then Canadian whiskey, which they use more rye and also called Canadian rye or rye whiskey. Then Japanese whiskey, which is made in Japan, and it is aged in Mezunara oak barrels, and which gives very unique flavors. So this was the all related information about the different categories of whiskey.